Hi, Lilita. Good morning. Sir. Morning, How are sir. you? Morning. I'm good, sir. How are you? I'm good. I'm good. How was your day yesterday? It was good, Good? sir. Yes. Yeah. Yeah. So did you cover up the writing part? जो मैंने बोला था, the the very precise history of Europe that we discussed yesterday. No, sir. I didn't write it. I just revised what we wrote yesterday, and I was actually revising globalization. वो week में globalization का test देना है ना? Very good. बड़ा लेकिन पढ़ा मैंने जितना हमने किया लिखा. I will write it. No worry. Okay. Okay. So हमने कल क्या डिस्कस किया? Tell me. Yes, sir. हमने कल देखा था कि एग्जैक्टली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये वैसे तो ये बहुत एंशिएंट से है, बट एज ए डिसिप्लिन ये बहुत यंग है. और सबसे पहले जो है वो इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स थी एक यूके में, वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. तो इसीलिए ज्यादातर जो है वो इस डिसिप्लिन में यूएस और यूके ही डोमिनेट करता है. और बाकी अगर इसके मीनिंग की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो मतलब इन द वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि यूएन, डब्ल्यूबी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी. एक सेकेंड, आई एम जस्ट फॉर्मिंग सेंटेंस. No. So basically, international relations अगर एक लाइन में कहें तो politics among nations. जो बाकी nations हैं, exactly. Very good. तो बाकी nations हैं उनके बीच में जो politics होता है और उसका impact इन organizations की उन politics पर जो impact होता है वो इन organizations का होता है, UN का, WB का, ये सब का. तो बेसिकली बाकी नेशंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस. तो ये सब हमने कल पढ़ा था. फिर हमने देखा कि आईआर कैसे जो है वो मतलब शुरू हुआ और कैसे वो मतलब बोलेंगे डेवलप हुआ. जैसे कि पहले वो हिस्ट्री देखी थी हमने थोड़ी सी, जैसे इवोल्यूशन, राइट वर्ड, इवोल्यूशन. जैसे पहले जो है वो व्हाट डू वी कॉल दैट, एथेंस वगैरह में था, स्पार्टा में, और उन्होंने जो है वो एक वॉर लड़ी थी. फिर डायनेस्टी एम्पायर सिस्टम आया, देन मॉडर्न स्टेट, देन वी हैव डन कि ये कैसे इस रिलेशनशिप होता है. ये जैसे बायलैटरल, इट कुड बी बायलैटरल वे, मल्टीलेटरल भी हो सकता है, या मल्टीलेटरल एट वर्ल्ड फोरम हो सकता है, जस्ट लाइक दैट. और बेसिकली इसकी कुछ पॉजिटिव चीज हैं और कुछ नेगेटिव, जैसे कि वॉर जो है, वॉर और पॉवर्टी नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं, पीस और वेल्थ जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं. तो बेसिक ओवरव्यू. बेसिकली 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, यू नोट इट डाउन कल की क्लास के बेसिस पे, एंड यू ट्राई टू राइट डाउन ऑन दिस आइडिया व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन. Of course, it will not come in the examination for, but आपके understanding के लिए, because we are initiating now. We are. Yes, sir. So what is international relation? आपको लिखना है. And then what do we study in international relation? What do we study in international relation? Discuss the evolution of international relations in the special context of modern Europe. Right? So, Westphalia, Treaty of Utrecht, से लेके कैसे 1915 तक आपको लिखना है.
ये क्या लिखा सर? इंटरनेशनल रिलेशंस in the special context of modern Europe. In special context, modern Europe. Yes, sir. Yeah. So that 3 questions you need to write. Okay. Yes, sir. हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ना? Yes, sir. यही डिस्कस किया था एक्चुअली। और फिर मैंने आपको सारा चीज यूरोप के बारे में बताया था कि यूरोप में जो पावर स्ट्रक्चर था, उस पावर स्ट्रक्चर में कौन कहाँ पे था, कौन सुपर पावर है, कौन ग्रेट पावर है, राइट, या मेजर पावर है, कौन मिडिल पावर है और कौन लेसर पावर है, राइट। Yes, sir. आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इसको बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, बैलेंस ऑफ पावर, राइट। Even the balance of payment, you can just imagine कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ पावर, अब क्या मतलब लगता है आपको इस वर्ड से, बैलेंस ऑफ पावर? जो सभी कंट्रीज है उनकी पावर में बैलेंस, बट ऐसा तो है नहीं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने बताया आपको कि कौन सा मेन एक्टर कौन है इंटरनेशनल रिलेशन का? नेशन स्टेट्स। Yes, you must write, जब आप IAS लिखिए, a nation state is an actor, the principal actor, the major actor in international relation, right? Yes, sir. And in international society, there are domestic society like American society, Indian society, Chinese society, right? These are the domestic society. But at international society, there are anarchy, right? क्या है? Anarchy. There is anarchy. This speech is very important. These 2 points while you define international relation, right? Yes, sir. Yes. जो कल मैंने आपको बता दिया था, right? So balance of power क्या होता है कि what is international relation? It is a politics among nation, बताया मैंने. Yes. Politics among nations. Okay? Yes, sir. जब देखा कि फ्रांस पावरफुल हो रहा है, ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन जुड़ गया किसके साथ? प्रशिया के साथ, फ्रांस को बैलेंस करने के लिए, राइट? ओके। आप देखेंगे मान लीजिए कि इंडिया चाइना में या चाइना इंडिया में, चाइना इंडिया, अब देखा कि चाइना बहुत पावरफुल हो रहा है, इंडिया किसके साथ क्लोज हो रहा है? यूएस के साथ, आज के दिन में, राइट? यस, राइट। सो it is an action of a nation to equalize power in the international system, right? It is a balance of power, means it is a equilibrium in the power distribution in international system. Did you get this little sense? Yes, sir. Right. So जब देखा कि मान लीजिए कि फिर पर्सिया बहुत पावरफुल हो रहा है, यूरोपियन पॉलिटिक्स में हमने देखा, कल बात किया कि जब देखा कि पर्सिया ज्यादा हो रहा है, पर्सिया बहुत पावरफुल हो रहा है, तो ब्रिटेन ने क्या किया? किसके साथ जाके मिल गया? फ्रांस के साथ, राइट? इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज नो परपेचुअल एनिमी एंड नो परपेचुअल फ्रेंड. इंटरनेशनल रिलेशन में कोई कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है ना? राइट? जो पावरफुल हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको पावर कम करने के लिए, राइट,
हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ मिल जाते हैं, गुटबंदी के जानते ना हिंदी में। यस। जो लॉन्डो लोग का झगड़ा होता है मोहल्ला में, वहां पावर, बैलेंस ऑफ पावर आपको बड़ा बढ़िया से मिलेगा, देखने को मिलेगा, राइट, कि जो ज्यादा पावरफुल हो रहा है, हाँ हाँ, तो दूसरा जो दो लौंडा है, जो मतलब जो लड़का है, जो मतलब गली का लड़का है, गली में ही बदमाशी करता है, राइट, बट जो जो दो कमजोर है वो जुड़ जाएगा, एक जो ब्लंट मजबूत जो पहलवान है उसके अगेंस्ट में, पावर को बैलेंस करने के लिए, राइट, सो दैट कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाए, राइट। यस सर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो जाए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का, बीओपी का। गॉट द आइडिया? यस सर। ओके, नोट इट डाउन, आप लिखिए। तो ऐसा तो फिर इंडिविजुअल कंट्री करती होगी, वो उसका अपना डिसीजन होता होगा कि हमें किसके साथ जुड़ना है। हाँ, उसका अपना डिसीजन है, क्योंकि कंट्री के पास सोवर्निटी है ना। देखिए, कोई भी कंट्री के पास सोवर्निटी है, और जो हर कंट्री का एक नेशनल इंटरेस्ट है, जो प्राइम नेशनल इंटरेस्ट है कि अपने आप को सिक्योर रखना, राइट, राइट, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, है ना। मान लीजिए गली मोहल्ले में झगड़ा होता है, तो क्या होता है कि मैंने आपको अभी झगड़ा एग्जांपल बताया कि मान लीजिए कि 3 गुंडा है, 1 2 एंड 3, राइट। सो पहला बहुत पावरफुल है, तो आप देखेंगे कि दूसरा और तीसरा आपस में जुड़ जाएगा पावर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दूसरे के पास एक सिक्योरिटी डायलेमा होता है। क्या होता है? डायलेमा, सिक्योरिटी डायलेमा, सिक्योरिटी डायलेमा, कि अरे भैया ये तो कभी भी अगर मिलेगा तो मुझे चाप देगा, अटैक कर दे। हाँ, चाप देगा, मुझे मारेगा। तीसरे को भी यही सिक्योरिटी डायलेमा है, राइट, कि अगर ये मुझे मिलेगा तो ये मार देगा, राइट। इसको तो हम दूसरे दो क्या सोचता है 3 के बारे में, अरे इसको तो हम कभी भी देख लेंगे, पहले 1 को देख लो। हाँ, 3 क्या सोचता है 2 के बारे में, अरे हम 2 को तो पहले कभी भी देख लेंगे, पहले को देख लो। तो इसको पावर बैलेंस करने के लिए 2 और 3 आपस में जुड़ जाता है, राइट। यस। सो देयर इज अ सिक्योरिटी डायलेमा, राइट। हर पता चला? आइडिया आया? हाँ, यस सर। अच्छा, लिखिए और पता चल जाएगा, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए बैलेंस ऑफ पावर, हेडिंग दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। यस। लिखिए बैलेंस ऑफ पावर, यस, BOP refers to an even distribution of power at international level. Even distribution of power at international level. Yes, sir. It denotes equilibrium of power in anarchic international society. जो इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है? एनार्किक है, राइट। It denotes equilibrium of power in anarchic world or international society. Yes, sir. It is one of the means to maintain peace in international system. लिख दिया? Yes, sir. अब देखिए, जो मैंने ये गली के मोहल्ले के झगड़े के बारे में बोला था, कि अब क्या है कि जब ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो पहला वाला भी जो है ना, वो ये ना लड़ाई नहीं करने की सोचेगा। सोचा कि भाई 2 से अगर झगड़ा कर लिए तो तीसरा भी आ जाएगा, जब ये दोनों मिल जाएगा तो हमको भी छोड़ देगा, है ना। हाँ, yes, sir. तो ये पावर जो इक्वलाइज हो गया है, इससे क्या हो गया? पीस एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। क्या हुआ है?
पीस एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, पीस एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में झगड़ा नहीं होगा, वार नहीं होगा, क्योंकि वार ही होगा जब झगड़ा ही होगा तो टेस्ट होगा कि बैलेंस ऑफ पावर था कि नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि 2 और 3 के फेवर में ज्यादा पावर था, या एक जो था अकेला ही इतना पावरफुल है कि 2 और 3 अगर आपस में जुट भी जाए तो दोनों को थकुच दे, है ना, दोनों को मतलब मार दे, राइट। यस सर। सो पीस एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए ये जो अलायंस होता है, ये जो बैलेंस, ये अलायंस होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी से अलायंस कर लेता है ना। यस, राइट। जनरली देखने को मिलता है घर में, राइट, होता है ना। इवन जो हमारा झगड़ा होता है भाई बहनों में, कि अगर एक से झगड़ा हुआ तो दूसरे से नजदीकी हो जाती है ना, राइट, राइट। होता है कि नहीं होता है? हाँ, राइट। सो लिखिए, लिखा आपने, इट इज वन ऑफ द मीन्स टू मेंटेन पीस इन द इंटरनेशनल सोसाइटी और इंटरनेशनल सिस्टम, यस सर, राइट। लिखिए, इट वर्क्स ऑन अ थियरी दैट यस सर, that peace and stability are most likely to be maintained when military power is distributed to prevent a single superpower hegemon or bloc from controlling the world. हेजिमोन, हाँ, a single superpower hegemon. मान लीजिए अभी तो हम हेजमन वर्ल्ड में रह रहे हैं, अमेरिका की हेजमनी है, लेकिन 2000 के बाद 9/11 के बाद मैंने जैसे कल बताया कि उसकी हेजमनी ब्रेक हो रही है, चाइना राइज कर रहा है। सिंगल पावर हेजमन मतलब होता है कि एक इतना ज्यादा पावरफुल होना, मैं बताता हूं कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसकी जो एक हेजमनी स्टैब्लिश हो गई पूरी वर्ल्ड में, कि अमेरिका ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, लोग एक्सेप्ट करने लग गए, राइट। यस सर, राइट। सो टू डिस्ट्रीब्यूट power is distributed to prevent a single superpower hegemon or bloc from controlling the world. यस सर, It aimed to prevent any other state from gaining a preponderance of power. It aimed to prevent any other state from gaining a preponderance of power in relation to its rivals. समझ में आया? It works on a theory that peace and stability are most likely to be maintained when military power is disturbed to prevent a single super Distributed, not military power is distributed. Military power is distributed to prevent a single superpower hegemon or bloc from controlling the world. नहीं, मतलब ये लाइन नहीं वाइज समझना? नहीं अरे समझा। मिलिट्री पावर, अच्छा, मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि पीस एंड स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन। देखिए, ये इसका मतलब है कि पीस कब एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जब एक आदमी इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो इस दोनों को कंट्रोल करे, राइट। अच्छा अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं पीस एंड स्टेबिलिटी तब मेंटेन की जा सकती है जब मिलिट्री पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि कोई एक सुपर पावर हेजिमन जो है वो वर्ल्ड को कंट्रोल ना कर सके। राइट 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 राइट, ठीक है सर। राइट, कि पीस एंड स्टेबिलिटी तब मेंटेन होगा जब एक सुपर पावर ना बन जाए।
मान लीजिए अगर चाइना सुपर पावर बन गया एशिया में, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी, राइट? इट मे अटैक sometime India, it may encroach Sri Lankan territory, it may encroach Pakistan territory, already encroach कर चुका है और ज्यादा करेगा, लेगा इसका, right? Yes, sir. So it works on a theory that peace and stability can be maintained, right, only when there when the military power is evenly distributed. जब evenly military power distributed होगा तो balance of power रहेगा, right? Peace and stability रहेगी. जब BOP रहेगी तो क्या होगा? Peace and stability रहेगा. Right? Yes, sir. Are you getting my point? और Yes. इसका एम ही होता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई इतना बड़ा पावरफुल ना हो जाए, राइट? तो एक कंट्री इतना बड़ा पावरफुल ना हो जाए, इसी को काउंटर करने के लिए दो कंट्री आपस में जुड़ जाते हैं, 1+2+3, राइट? Yes, sir. राइट. सो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पावर in other words produces countervailing power. Power in other words produces countervailing power, resulting in a balance of power. Yes, Power sir. in other words produces countervailing power, comma, resulting in a balance of power. Okay, for example, in the post-Westphalian world order, Great Britain, Russia, Austria, Prussia, France, Sweden, Portugal, and Spain were great power of the Europe. सबका नाम लिखना है. हाँ, लिखिए. यही तो पावर थे. 4 भी लिख सकते आप. ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, पोर्शिया, फ्रांस, इतना लिख ले. इसको छोड़ दीजिए, स्वीडन, पुर्तगाल छोड़ सकते आप. Great Britain, Russia, Austria, Prussia, France were the great power of Europe. Yes, sir. Nation state made alliance sometimes to balance the power, and sometimes disbalance the power among nation state. Right? Yes, sir. अच्छा, लिखिए the golden phase of balance of power. The golden phase of balance of power. Yes, sir. Golden phase of BOP. लिखिए 1648 to 1815, when there were many great powers in Europe. There were many great powers in Europe, and there was no superpower. There was no superpower or hyperpower.
Yes, sir. राइट. सो इस दौरान देखेंगे मैंने नाम लिखवा दिया है ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया. They were the great power, right? So sometimes France or Russia alliance कर रहा है, sometimes France or Britain alliance कर रहा है, sometimes to counter each other, right? Right? रशिया किसको बोलते थे? सॉरी, प्रशिया जर्मनी से पहले. जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ है 1871 में, राइट. ऑटोमन बिस्मार्क. उससे पहले जर्मनी नाम की कोई नेशन स्टेट नहीं था, राइट. हाँ, और उसी टाइम पे इटली का भी हुआ. तो इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ है, राइट. और विद इन जर्मनी जो प्रशिया था वो बहुत पावरफुल था, राइट. और Yes, जो बिस्मार्क था वो प्रशिया का ही किंग था, ओके, चांसलर था. तो ये गोल्डन एज था, बिल्कुल प्योर गोल्डन एज, राइट. yes, sir. लिखिए फ्रॉम, इसी में हाँ इसी में लिखिए, फ्रॉम 1815 to 1914 British और द ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे लिखिए, द ग्रेट ब्रिटेन emerged as great power and in order to counter its power, Germany and Austria-Hungary joined hands to BOP. Right? देख लिया? yes, sir. In response, Yes, sir. the Great Britain made alliance with France and Russia. This phase Yes, is sir. also known as golden period, golden phase of BOP. Yes, sir. However, the Great Britain Yes, sir. Yes, sir. was successful in establishing its empire
on every continent. Every continent of the world. Done? ये भी गोल्डन फेज था और जो ये पहले वाला golden, था गोल्डन फेज। हाँ वो भी गोल्डन फेज था, लेकिन इस फेज में एक्चुअली जो ब्रिटिश था पावरफुल ज्यादा हो गया था, फिर भी गोल्डन फेज स्कॉलर ने माना है कि ये भी गोल्डन फेज था, राइट? या बैलेंस ऑफ पावर। इवन इसको आप वो पेन जो बोलिए। आप जैसे थोड़ा डार्क वाला करते हैं ना सर, वो पेन जिससे आप अच्छा, लिखते हैं। ओके ओके, थोड़ा और डार्क करना है मुझे। या अब देखिए, हाँ यस सर, यस हाँ डन, यस। ओके। अब क्या है, लिखिए पोस्ट WW2 एंड BOP। एक सेंटेंस लिखना है इसमें, लिखिए इन द पोस्ट WW2 BOP declined. BOP declined and world emerged as bipolar. Emerged as bipolar. यस सर। अब लिखिए पोस्ट कोल्ड वॉर एंड BOP। Post Cold War and BOP. It was or it is not was, it is यस सर। a unipolar war. It is a unipolar world where US established its hegemony in the international system. In the international system. यस सर। Right? अच्छा, एक लाइन लिखिए इसी में, the BOP defined and discussed by scholars create confusion regarding its definition. Regarding its definition. Regarding its definition. यस सर। देखिए, the Ernest has यस सर। Ernest has defined यस BOP as, देखिए पहला, as any distribution of power
as any distribution of power. Ernest has defined BOP as any distribution of power. Yes, sir. कॉलम दीजिए. An exact equilibrium of power. An exact equilibrium of power. Equilibrium of power or a hegemonic situation. A hegemonic situation. In both the condition, in both conditions, Yes, sir. peace and stability. Peace and stability Yes, sir. are maintained. Yes, sir. राइट. तो बहुत कंफ्यूजन है एक्चुअली डेफिनेशन को लेकर के. कोई कहता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ पावर होना चाहिए तभी हम मानेंगे कि ये बीओपी है. कोई कहता है नहीं कि अगर हेजेमनी भी है तो बीओपी. एक्चुअली बीओपी का मकसद क्या था? पीस. कैसे पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना रखना है ना. तो अगर हेजेमन पावर भी आ जाता है, मान लीजिए यूएस, जब से यूएस इमर्ज हुआ 1990 से, उसके बाद कोई बड़ा वार नहीं हुआ है राइट, वर्ल्ड के बाद. तो अगर वो भी एक्चुअली बीओपी में एक्चुअली अर्नेस्ट हास ने कंसीडर किया. चलिए अब लिखिए, बीओपी इज टेस्ट. वार इज द टेस्ट ऑफ बीओपी. नेक्स्ट. हाँ, इसी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. वार इज द टेस्ट ऑफ बीओपी where power is in equilibrium or not. War is test of the BOP where power is in equilibrium or not. मैंने कहा ना कि झगड़ा तो टेस्ट है कि पावर इक्वल है कि नहीं इक्वल है. जब झगड़ा नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि पावर इक्वल था कि नहीं था. तो वार इज. हाँ लिखिए, a great power had no permanent friends or enemies and is expected to join former enemy in alliances. A great power has no friends or enemy is expected to join former enemy in new alliances if new threat to the status quo arose. Yes, sir. लिख लिया. A great Yes, power sir. has no permanent friend or enemies and is expected to join a former adversary. अगर for example लिखिए, the President Nixon Nixon visited China in 1973 and the US recognized China in UN in
ये वन। आपको पता है 1973 से पहले चाइना को रिकॉग्निशन नहीं मिला यूनाइटेड नेशन में। प्रेसिडेंट निक्सन किया था और अमेरिका के पास क्या था, खराब झगड़े थे चाइना और किसके बीच में, यूएस के बीच में। बट अमेरिका को हाँ इसको यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए राइट प्रेसिडेंट ने क्या किया, चाइना को विजिट किया। राइट, सो इवन एनिमी था, नाउ प्रेसिडेंट निक्सन ट्राई टू मेक चाइना एज हिज फ्रेंड। राइट, yes sir. So can I come in 1 minute? yes, sure. Yes sir. Yeah, देखिए, the visit of the US president was done in order to balance the power of the USSR. The visit of the US president was done in order to balance the power of the USSR. Yes sir. So देखिए, मेथड ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर, क्या क्या तरीका होता है? बेसिकली दो तरीका होता है, बताता हूं। देखिए, मेथड ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर के मेथड तरीके क्या होते हैं, पावर कैसे बैलेंस होता है। लिखिए, मेथड ऑफ बीओपी। मान लीजिए बैलेंस ऑफ पावर करना है तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए झगड़ा होता है लड़के के बीच में, 1 2 एंड तीसरा लड़का हमारा, और ये झगड़ा होता है और एक के पास बहुत पावरफुल है, तो 2 और 3 क्या करेगा, अलायंस करेंगे। और दूसरा तरीका, एक तरीका है कि ये अपना पावर को मैक्सिमाइज करेगा खुद ही,
मान लीजिए हथियार नहीं है तो हथियार इकट्ठा कर लेगा। वो भी तो पावर है ना। यस। राइट। तो एक तो तरीका होता है कि सेल्फ हेल्प करेगा। सेल्फ हेल्प होता है कि अपना अपने इकोनॉमी बढ़ाए, अपना पैसा बढ़ाएगा, इकोनॉमी अपना हथियार बढ़ाएगा, है ना। राइट। यस सर। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका है कि ये इससे जोड़ लेगा, अपना गठबंधन कर लेगा। यही होगा ना, यही दो तरीका है। राइट। सो यही तरीका है। लिखिए मेथड ऑफ बीओपी, लिखिए सेल्फ हेल्प। पहला लिखिए सेल्फ हेल्प, लिखिए यस। सेल्फ हेल्प। इट इज of the reliable means to do BOP. Nation states maximize their power, right? In order to secure their interest. यही ना बीओपी क्यों करते हैं? इंटरेस्ट को, पीस एंड स्टेबिलिटी भी है, अपना सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरा लिखिए अलायंस। राइट। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जो सेल्फ हेल्प लिखा है इसमें हम आर्म्स रेस भी लिख सकते हैं। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा लिखिए आर्म्स रेस। आर्म्स इकट्ठा करो, तो वो सेल्फ हेल्प में ही आ जाएगा, बट ठीक है अलग से लिख लीजिए आर्म्स रेस। सेल्फ हेल्प मतलब ज्यादा हो जाता है, उसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है कि आप इकोनॉमी भी अपना आगे बढ़ाइए, है ना। यस सर। तो ये मतलब तीन तरीका है। जैसे भी हाँ मतलब हाँ, इकोनॉमी, हाँ अपना इकोनॉमी बढ़ाइए खूब अच्छे से। राइट। यस। ये तीन तरीका है सेल्फ बैलेंस और पावर को बढ़ाने के लिए। कि अगर आपको अपना पावर बढ़ाना हो तो खूब खाइए पीजिए, खूब मोटा तगड़ा हो जाइए, ताकि दूसरों से आप हार ना सके। राइट। और दूसरा तरीका है कि अगर आप हार जाते हैं, स्कूल में होता है ना, तो आप क्या करिए, जो मोटा तगड़ा स्टूडेंट है उससे आप दोस्ती कर लीजिए। यस। स्कूल में होता था ना, यू रिमेम्बर? मैंने तो कभी लड़ाई झगड़ा किया नहीं सर। अच्छा। नहीं, स्कूल में ऐसा होता था, खासकर सरकारी स्कूलों में जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई किया है, तो वहां पर क्या होता है, जब टीचर चले जाते हैं ना तो एनार्की हो जाती है पूरा। हाँ, इट्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशन। राइट। और जो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ग्रुप में बटे होते हैं। राइट। और आप ग्रुप का जो वहां पर आप देखेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल सिमिलर है। और जो हर बच्चा है, हर स्टूडेंट अपना स्ट्रैटेजी अपनाता है। पहले क्या है, सिक्योरिटी डायलेमा है। हमें क्या सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी हमें, क्या खुद हमें इतना पावर है कि मैं अपने आप को सिक्योर रख सकूं? अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? अलायंस करूंगा, है ना। या पावर को मैक्सिमाइज करूंगा, उसमें आर्म्स रेस भी हो जाता है। अब आइए मैं एग्जांपल लेता हूं, बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया। अब साउथ एशिया में बैलेंस पावर कैसे करेंगे? मान लीजिए एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कौन है? चाइना। एशियाज बीओपी, लिखिए एशियाज बीओपी।
Yes, sir. लिखिए China wants a unipolar Asia. Unipolar Asia, right? China wants a unipolar Asia, but multipolar world. क्योंकि उसको पता है कि वर्ल्ड में तो वो अभी मतलब हाँ नहीं उतना हो ज्यादा, पाएगा। राइट राइट। तो मल्टी पोलर, चाइना क्या चाहता है कि एशिया में वो सबसे ज्यादा प्रभाव मतलब पावरफुल रहे, लेकिन यू नो वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो कि मल्टीपोलर हो, वहां पे बहुत ज्यादा पावर हो। अमेरिका क्या चाहते हैं, लिखिए द यूएस वांट्स multipolar Asia, multipolar Asia and unipolar world. अमेरिका नहीं चाहता है कि उसको कोई मतलब यूनिपोलर है उसके कोई पावर को चैलेंज करे इंटरनेशनल लेवल पे, बट वो चाहता है कि एशिया में मल्टीपोलर हो। और वो कैसे हो कि एशिया में चाइना का कोई कंटेंडर हो, कोई चाइना को बीओपी करे, राइट? यस सर। राइट। तो इंडिया एशिया में चाइना को बीओपी कौन करेगा? कौन कर सकता है? रशिया, इंडिया चाइना एशिया, वो तो एशिया में नहीं है ना, क्या नाम है इसका, रशिया चाइना में सॉरी एशिया में नहीं आता है, है? नहीं एशिया में ही आता है, एशिया में ही आधा पार्ट और आधा यूरोप में। आधा यूरेशियन पार्ट का अनहैबिटेड लैंड है, यू नो दिस पार्ट, दिस थिंग्स दैट रिमेन ऑलवेज कोल्ड. The larger part of Eurasia is uninhabited. अच्छा, who would do BOP in Asia against China? India. China, you know, the US wants, you know, लिखना है India. हाँ हाँ लिखिए, अरे US wants, you know, India can do BOP against China. Asia's BOP. China wants a unipolar Asia but multipolar world. But the US wants multipolar Asia, unipolar world. Who would do BOP in Asia against China? The US wants India can do BOP against China in Asia. पर अभी तो नहीं कर सकते हम, लॉन्ग टर्म का पता नहीं। लॉन्ग टर्म की हाँ नहीं अभी तो एक्चुअली ये प्रोसेस है, you know, BOP is not a 1 year or 1 or 2 year project. It is a process. How can we see quad? Right? We can see quad in terms of BOP, right? To challenge the, you know, rising of dragon, Beijing. अभी आ रहे I'm coming in detail. What is China? How China is threat, right? And how we are handling China. Who would do BOP in Asia against China?
The US wants India can do BOP against China in Asia. Right? लिख लिया? Yes sir. Done? Yes sir. अच्छा, ऐसे लिखिए BOP in South Asia. BOP in South Asia. और South Asia's BOP. लिखिए South Asia BOP. Yes sir. अच्छा, लिखिए India wants again. India wants a unipolar South Asia, and multipolar Asia and multipolar world order. But the US wants, multipolar South Asia as well as Asia and a unipolar world. Right? Who would do? Which country would balance BOP against India? इंडिया के खिलाफ कौन कर सकता है? Which country would do BOP against India? Pakistan. पाकिस्तान. Right? Yes. US policy. पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया. Yes. Don't undermine it. Pakistan is very powerful. It's nuclear, हाँ. अब हमने देखिए 3 वार लड़ा है, राइट? और आपको पता है कि केवल 1971 छोड़ करके इतना हमें, राइट? US policy is to support Pak to do BOP with India. ये रहा है, आप देखिए पूरा यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है इंडिया की, इंडिया को मतलब चेक करने के लिए. यही तो इनको आर्म्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं. एग्जैक्टली. अभी जो ये लड़ाई हुई थी बालाकोट में, राइट? और ये थोड़ा सा छोटा सा एक झड़प हुई थी, तो उन्होंने कौन सा फाइटर उड़ाया था? F-16, रिमेम्बर? F-16 किसने दिया था? यूएस का था F-16. यही देते हैं. ये कितने हिपोक्रेट है, और फिर बोलते हैं ये इनका वो कर दो. This is power politics. खुद उनको सपोर्ट करते हैं, फिर एग्जैक्टली पॉलिटिक्स में जाके रियल पावर पॉलिटिक्स. आपको किसी को पावरफुल ज्यादा नहीं होने देना है, सबको अपने हिसाब से नचाना है, राइट? आपको एक सर्कस तैयार करनी है और उस सर्कस में आराम से यस. The world politics is about that circus, right? हाँ, जो जादूगर है वो हमेशा ज्यादा वो कमांड देता है और बंदर नाचते हैं. उसी तरह
उसके इशारों पे हम लोग नाचते हैं, तो अमेरिका के वो इशारों। जादूगर कौन है? वो अमेरिका है, बाकी सब और क्या, बंगाल। और क्या, और क्या, और क्या। आप देखिए अभी इजराइल ने अटैक किया था किसके ऊपर? फिलिस्तीन। पैलेस्टाइन के ऊपर। अच्छा, मैं आपको अरब वर्ल्ड में आपको बताता हूँ। बीओपी इन अरब, लिखिए बीओपी इन अरब वर्ल्ड। बीओपी इन अरब वर्ल्ड। अब क्या है? यूएस, द यूएस सपोर्ट यूएस सपोर्ट सऊदी अरबिया, सऊदी अरब against threat of Iran, राइट? अब यूएस सपोर्ट करता है सऊदी अरबिया को ईरान के अगेंस्ट में, बट इट सपोर्ट्स इजराइल, राइट, अगेंस्ट अरब। अब देखिए, राइट, ये इजराइल को सपोर्ट करता है अरबियन कंट्री में, राइट। अगर अमेरिका अगर सपोर्ट ना करे तो इनको नोच खा जाए इजराइल को। इजराइल, अमेरिका ने कहा, इजराइल ने बिल्कुल सीज फायर कर दिया, 2-3 दिन में सीज फायर हो गया। अमेरिका ने कहा बंद करो, बंद कर दिया। आपने देखा कि जब इंडिया और पाकिस्तान बालाकोट में ज्यादा टसल में चले गए तो ट्रंप ने फोन मिलाया और बोला कि मैं तैयार हूं, मैंने फोन किया उनको, ये फोन करते हैं, अच्छा जी ठीक हो जाइए। कारगिल वार के टाइम पे भी अमेरिका ने उनको बोला कि अच्छा आप लोग झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा नहीं करते, तो राइट। फिर क्यों, मतलब वो ये बोलते होंगे ना कि मैं मतलब अदर पार्टी को या जिसको भी सपोर्ट कर दूंगा, तो वो फियर में आ जाते हैं, ऐसा? नहीं, दैट्स अ ग्रेटर पॉलिसी। अब क्या है, फियर नहीं है यहाँ पर, इनको क्या करना है, इनको बेचना है आर्म्स एंड एम्यूनिशन। किनको? यूएस को? यूएस को। तो एक थ्रेट बना के रखता है, मान लीजिए इंडिया को थ्रेट बना के रखेगा कि तुझे चाइना से थ्रेट है, या पाकिस्तान को ये बना के रहेगा तुम्हें इंडिया से थ्रेट है। अब इंडिया से थ्रेट है तो तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, लो मुझसे गन लो, मुझसे F-16 लो। इंडिया को बोलेगा अच्छा तुम्हें चाइना से थ्रेट है, मुझसे गन लो, मुझसे वार हेड जो वगैरह खरीदो, राइट। ओके। ओके, ओके, ओके। नाउ note it down, the rules of rivals in the balancing process. Rules for rivals in balancing process. अब जो वीक स्टेट है वो क्या चाहता है, या रूल्स बैलेंस ऑफ बीओपी रखने के लिए क्या रूल्स है राइवल कंट्री के बीच में? पहला है स्टे विजिलेंट। कोई भी नेशन स्टेट है, दे मस्ट बी विजिलेंट। देखिए, नेशन स्टेट must be vigilant against any threat to security and territorial sovereignty. Territorial sovereignty. लिख दिया? या दूसरा लिखिए, seek allies whenever country cannot match the armament of an adversary. Seek allies
second point is seek allies whenever your country cannot match the armament of an adversary. इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी पता चल रहा है इसमें. थर्ड लिखिए रिमेन फ्लेक्सिबल इन मेकिंग अलायंस. इसमें लिखिए नो परमानेंट एनिमी. And no permanent friend. चौथा लिखिए oppose any state that seeks hegemony. Oppose any state that seeks hegemony. Done? Yes, sir. अब क्या है कि this balance of power is, मैंने शुरू में कहा कि it is one of the means to secure establish peace and stability in the world order, right? But can BOP help in stability and a peace process? लिखिए can BOP help to preserve world order? Preserve world order and stability in the international relation in the IR. The critiques of critique of BOP has raised or have raised several objections. Critique of BOP have raised several objections. Yes, sir. Done? Okay. Yeah. Okay. Likhiye critique of BOP. Criticism of balance of power. Yes. Nehru was severe critic of BOP. He said BOP means fear of war. Hence, he gave alternative and solution to BOP. He gave solution to BOP. Yeah. लिखिए disarmament is a one solution. पहला लिखिए, पहला disarmament, second NAM, non-alignment movement. Disarmament मतलब आर्म्स के बिना. Exactly, नहीं, don't indulge in arms race. अच्छा, disarmament लिखिए. Its motto is not to indulge in arms race, on contrary, nation state must disarm, or abolish
abolish, chemical and nuclear weapon. Chemical and nuclear weapon, which are most dangerous. Done? Yeah. Okay. अब नाम के बारे में ना, नाम के बारे में थोड़ा और मैं भी लिखवा दूंगा. अच्छा, लिखिए, इसी नाम में ही लिखिए. नेहरू, नाम के आगे लिखिए. नेहरू Yes, sir. Nehru, along with Tito and Nasser, did not like to join any power block in the post WW2, post World War II. They did not bandwagon और bandwagon मतलब bandwagon मतलब जो हवा चल रहा है. मान लीजिए सब चल जा रहे हैं यूएस से मिलने, हम भी यूएस में जाके अलायंस कर लेते हैं. या हवा चल रही है, हाँ भेड़ चाल, यस, हवा चल रही है कि यूएस से साथ में जाके सब मिल रहे हैं, हम भी जाके मिल रहे हैं. राइट. So लिखिए, they did not bandwagon or become a satellite state. A satellite state. टीटो और नसीर कौन थे? नाम में मैंने पढ़ा ना 5 लोग थे जिसमें नाम को एस्टैब्लिश किया था. ठीक है. यस मार्शल टीटो, कर्नल नासिर. आइडिया दिया था. Okay. So Nehru, along with Tito and Nasser, did not like to join any power bloc in the post WW2. They did not bandwagon or become a satellite state. नाम का और डेट का बड़ा इशू है सर मेरे साथ. Yes. मतलब they started third way in international politics. That is NAM. Right? Yes. Okay. So NAM was one of the means to counter the BOP. लिखिए. So ऐसे इसी में एक लाइन और लिखिए. So NAM was a means to counter BOP, and give an alternative for world peace
and cooperation. For world peace and cooperation. Yes, sir. Right? So नेहरू critic थे. अब लिखिए दूसरा critic Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. स्पेलिंग क्या होगी इनकी? WOO Woodrow, DROW Woodrow, right? Woodrow Wilson, WILSON, Woodrow Wilson was a severe critic of BOP. Yes. Woodrow Wilson was a severe critic of BOP. He proposed alternative international system. A liberal world order. He proposed alternative international system, a liberal world order where Yes, sir. nation state can ensure security Yeah. not through BOP but through collective security. Not through BOP but through collective security. Yeah. Right? ये दो मेजर क्रिटिक थे, एक नेहरू था और एक वुडरो विल्सन था. वुडरो विल्सन, राइट? Yeah. अब लिखिए व्यू ऑफ राजेश राजगोपालन, या इसको हम थोड़ा बाद में लिख सकते हैं जब मैं इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में आऊंगा. अब यहाँ लिखिए, अब लिखिए व्यू ऑफ यूएस स्कॉलर अबाउट यूएस एंड चाइना. व्यू ऑफ, उससे पहले एक पैरा लिख दीजिए, रेलिवेंस ऑफ बीओपी in 21st century. Relevance of BOP in 21st century. Yes, sir. Right? लिख दिया? Yes, sir. Okay. अब लिखिए the US scholar, इसमें लिखिए the US scholar sees clear threat of China, Yes. They argue that Yeah. China is not only challenging hegemony of US, China is not only challenging the hegemony of US, Yeah. comma, it wants to displace the US and establish its own hegemony. Yes, sir.
200 years ago, Napoleon warned. 200 years ago, Napoleon warned. देखिए यहाँ पे लिखा है, right? 200 years ago, Napoleon warned. Let China sleep. Let China sleep. Yes, let China sleep. Yes. Semicolon. When she wakes, she will shake the world. Let China sleep. When she wakes, she will shake the world. आम आदमी सोता हुआ शेर है, जगाना नहीं है, right. Okay. Today, China has awakened, and the world is beginning to shake. Yes, sir. Today, China has awakened, and the world is beginning to shake. लिख दिया? Yeah. China is a middle kingdom complex. China is a middle kingdom complex. Which wants to establish Sinocentric world. Yes. China wants a multipolar world but unipolar Asia. इसी में China wants multipolar world but unipolar Asia. Full stop. On contrary, the US wants Yeah. On contrary, the US wants unipolar world but multipolar Asia. John Mearsheimer मीरसाइमर का स्पेलिंग यहाँ लिखा है, देखिए जॉन लिखिए JOHN, जॉन मीरसाइमर। ये बहुत बड़े पावर पॉलिटिक्स थिंकर हैं। जॉन मीरसाइमर Yes, sir. his book The Tragedy of Politics, The Tragedy of Great Power Politics, John Mearsheimer in his book The Tragedy of Great Power Politics, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, The Tragedy of Great Power Politics, Yes, sir. argued that Yes, sir. nations does not seek BOP. Nations does not seek BOP Seek POP. हाँ, nations does not seek BOP Yes, sir. but seek hegemony.
seek hegemony. Yes, sir. He further argued that Yes, sir. that nation does not accumulate only for the nation does not accumulate power for the sake of defense. The nation does not accumulate for the sake of defense. Yes, sir. But it accumulates power in order to attack, offense. Accumulates power in order to attack. Remember Machiavelli? Yeah. कि कोई आप पहले अटैक करेगा तब तो आप वो करेंगे डिफेंस. हाँ, इतना पावर आप अपने आप गेन कर लो कि ऐसा नहीं कि आप अपने आप को डिफेंड, नो, डिफेंड तो सोचना ही नहीं. थिंक अबाउट ऑफेंस, राइट? आप अटैक कर सकते हो, राइट? देखिए, ग्राहम एलिसन in his book, Yes, sir. Destined for War, Yes. can destined for war, can America and China escape? Can America and China escape? Yes, sir. Can America and China escape Thucydides's trap? स्पेलिंग देख लीजिए, Thucydides's trap, THUCYDIDES, Dides trap. अब बताते ये ट्रैप है क्या? Yes, sir. Can America and China escape Thucydides's trap? तो इनके किताब का नाम था Destined for War, Can America and China escape Thucydides's trap? Argues that Yes, sir. argued that there would be no peaceful rise of China. There would be no peaceful rise of China as a hegemon power. There would be no, ये ग्राहम एलिसन कहते हैं, अभी किताब आई है, ये किताब आई है 2010 का, 4-5 साल हुआ है. हाँ. Yes, sir. और ये कहते हैं कि there will be no peaceful rise of China as a hegemon power, right? It may, does it mean, लिखिए, does it mean that war inevitable between US and China? Does it mean that war inevitable between US and China? Question mark. Yes, sir. Graham Allison Yes, sir. argues that both China and US have common thing. Graham Allison has argued that both China and US have common thing. Both
US and China have common in मत in लिखे, थिंग मत लिखे. Both US and China have common in colon पहला. Both wants to dominate the world. Both wants to dominate the world. Yeah. They are driven by a common ambition. They are driven by a common ambition to make their nation great again. To make their nation great again. Second, both take pride in their own unique leadership capabilities. Both take pride in their own unique leadership capabilities. Third, both want to become hegemon power. Both want to become hegemon power. Yes, sir. Okay. Alison asked the question. Graham Allison asked question. Yes, sir. Will President Trump, उस समय प्रेसिडेंट ट्रम्प ही थे ना 2-4 साल पहले, अभी तो है, हाँ, अभी वाइटन नहीं लिखना, ग्राहम एलिसन लिख रहे हैं, किताब का नाम लिखा हुआ है, लिखिए ग्राहम एलिसन आस्क क्वेश्चन के बाद कॉलम दे दीजिएगा और अब लिखिए. Will President Trump or Jinping or their successor, will President Trump and Jinping or their successor follow in the great tragic footsteps of the leaders of Athens and Sparta in ancient Greece, or Britain and Germany in the pre-World War I era? Yes, sir. अब थ्यूसिडिडी ट्रैप समझे, थ्यूसिडिडी ट्रैप पहले समझा देता हूँ, ये ट्रैप है क्या. थ्यूसिडिडीज ने एक किताब लिखी थी पेलोपोनेशियन वार, ठीक है, और उस किताब में उन्होंने कहा था, अब ये जो किताब है पेलोपोनेशियन वार, बार बार मैं इस किताब की चर्चा करता हूँ, इस किताब में 2 स्टेट आपस में लड़े थे, वो था स्पार्टा और एथेंस. अब एथेंस और स्पार्टा में क्यों लड़ाई हुई? कोई रीजन नहीं था, राइट. एथेंस और स्पार्टा में इसलिए लड़ाई हुई कि एथेंस बहुत ही आगे बढ़ रहा था, राइट. इट वाज अ राइज ऑफ एथेंस दैट feared स्पार्टा. वो डर पैदा कर दिया स्पार्टा के अंदर कि एथेंस पावरफुल हो रहा है, और स्पार्टा ने अटैक कर दिया एथेंस के ऊपर. यू गॉट द आइडिया, राइट. कोई लड़ाई के कारण नहीं है, बट एक डर है कि एथेंस
राइज कर रहा है, तो एक ऐसा डर है कि चाइना राइज कर रहा है, राइट क्या, राइट। और मैं बताता हूं कि जर्मनी और इटली, ब्रिटेन वर्ल्ड वार से पहले क्या, ये जर्मनी और इंग्लैंड में बड़ा ही डर था। ब्रिटेन को लग रहा था कि जर्मनी को कोई नहीं रोक सकता, अगर जर्मनी का राइज हुआ तो ब्रिटेन मर जाएगा। लड़ाई का कोई कारण नहीं था, जर्मनी राइज कर रहा था, इनकी इंडस्ट्री राइज कर रही थी। हाँ, ये भी कॉलोनी में अपना हाथ पैर मार रहा था, अफ्रीका में अलग अलग कॉलोनी को छाप रहा था, कोई नहीं था। लेकिन इनकी जो एक ट्रैप था, इनको डर था ब्रिटेन को कि जर्मनी का राइज होगा तो ब्रिटेन का फॉल होगा, राइट। और इसको बोलते हैं थ्यूसिडिडीज ट्रैप। मतलब ये कि कोई रीजन नहीं है, बस ये आपको डर है कि वो राइज कर रहे हैं, बस। वो राइज करेगा तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा हम लोग को भुगतना पड़ेगा, हम लोग डिक्लाइन कर जाएंगे, राइट, है ना। यस सर। लिखिए, एलिसन आर्ग्यूड दैट, इसी में लिखिए, एलिसन आर्ग्यूड दैट या एलिसन आर्ग्यूड से पहले लिखिए, इसको काट दीजिए। क्या सर? एलिसन आर्ग्यूड दैट को काट दीजिए और लिखिए, पहले थ्यूसिडिडीज के बारे में लिख देते एक लाइन। देखिए, फॉर थ्यूसिडिडीज, for the ancient Greek historian, state behavior is driven by, watch mat likhie, state behavior is driven by fear, honor and interest. Fear, honor and interest. Yeah. Is it that, अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछिए, is it that the US behavior is driven by fear, honor and interest? Question mark. Yeah. Yeah. लिखिए, अब लिखिए, एलिसन आर्ग्यूड दैट, एलिसन आर्ग्यूड दैट Yes sir. Alison argued that China's economic development is transforming it. Alison argued that China's economic development is transforming it into a formidable political and military competitor. Alison argued that China's economic development is transforming it into a formidable political and military competitor. Yes sir. The possibility that the US and China could find themselves at war in next decade, in next decades. अब ये पॉलिसी बताते हैं कि ये इसके बीच में वार इनएविटेबल है, वार तो होगा, राइट। ये लिख लिया? या
हाँ, ये अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग ऑथर के बारे में अलग अलग ये कहते हैं, चाइना और चाइना और अमेरिका के बीओपी के बारे में। अब क्वेश्चन लिखिए, इज अमेरिकन हेजेमनी डिक्लाइनिंग? ये भी क्वेश्चन है। इफ यस, हाउ? Is American hegemony declining? If yes, how? Yes, sir. लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, hegemony has two meaning. Hegemony has two meaning. हेजिमनी का दो मतलब है। पहला लिखिए, फर्स्ट ओवरवेलमिंग पावर, power, and second, the ability to use this power to dominate others. Hegemony has two meaning. Pehla, overwhelming power, and secondly, the ability to use this power to dominate others. Right? Yeah. देखिए, a hegemon state, that possesses vast superior military and economic capabilities. A hegemon state that possesses vast superior military and economic capabilities. Yes, sir. Right? Power means capabilities. Power means capabilities. Power means capabilities. Yes, sir. Right? It means, yeah. addition of the size of population, territory, Yes, sir. economic capacity, Yes, sir. military strength, Yes, sir. and ability to take favor of others. Yes, sir. Right? देखिए, John Mearsheimer, Yes, sir. Mearsheimer, Mearsheimer defined hegemony as a state that is so powerful that it dominates
Yes, It sir. dominates, yeah, all the other states in the international system. It dominates all the states, in the international system. Yes. The Neo-Gramscian thinker Robert Cox Yes, sir. has argued that Yes, sir. hegemony is employed or hegemony is deployed by two elements. Hegemony Yes, sir. is deployed by two elements, This is First, MI, no? sorry, This is MI. फोन Yes. पता नहीं किसका किसका आता रहता है, बेकार का कोई मतलब नहीं है फिर तो आई एम सेइंग कि जो फोन है ये MI है जिस पे आ रहा है. भी। यस यस, दिस इज माइन फोन, या मैंने बताया ना उस दिन। और नहीं जी, MI का जो है वो पेटेंट है, मतलब ये वाला. अच्छा अच्छा अच्छा, इज इट? जैसे वो दूसरा, सैमसंग का वो मैसेज में यू हर्ड दैट वॉइस शू शू, पता नहीं वो विसल टाइप का जो आता है ओके, वो हाँ हाँ सैमसंग हाँ, का है. वो ओके सैमसंग का है. ओके ओके, ये भी सर अपना अपना होता है ना इनका, मतलब हाँ हाँ हाँ, सो दैट यू केम टू नो कि ये कौन सा वाला कौन सा है इंटेलेक्चुअल ब्रांड. प्रॉपर्टी, राइट? बताऊंगा मैं, या आईपीआर। अच्छा, हेजेमनी इज डिप्लॉयड बाय इन by two बाय टू elements. एलिमेंट्स. या One is force, second is consent. सेइंग इट्स कंसेंट. ओके. या फोर्स और कंसेंट, दो ही तरीका है हेजेमनी को डिप्लॉय करने का, राइट? यस सर. लिखिए, द राइज ऑफ राइट विंग इन द यूएस, the rise of right wing in the US the rise of right wing in the US यस सर. its support to Brexit, ब्रिटिश जो एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, यस. rise of populism यस सर. critique of liberal political order, critique में ऐसे लिखेगा, critique critique of liberal political order, यस सर. and America first policy या has hampered the US a lot. यस सर. Today, the United States is well aware of the fact that today the US is well aware of the fact that यस सर. it cannot deal with China and Russia alone.
Yeah. So it made quad. So C लिखिए, C made quad. कंट्री में ना C लिखते हैं, it नहीं लिखते हैं. मैं भी हाँ कहीं लिख देता हूँ, बट जैसे अमेरिका लिखते हैं ना, अमेरिका, और इसके बाद हमने प्रोनाउन यूज करना है ना दूसरे सेंटेंस में, तो हम she लिखेंगे. हाँ, she लिखेंगे, it नहीं लिखेंगे. it हमेशा हम लिखते हैं, हाँ, कंट्रीज के लिए she लिखते हैं, राइट. फीमेल. हाँ, फीमेल, या राइट. नहीं, भारत माता को तो समझ में आता है, दैट इज माता, लेकिन ये किसी भी कंट्री के बारे में हम शी लिखते हैं. प्रोनाउंसिएशन जो प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन के बदले, वो शी यूज करते हैं. ओके, शी मेड क्वाड. ऑन द अदर हैंड, the countries of ASEAN and SAARC are well aware of the fact that countries of ASEAN yes, and SAARC are well aware of the fact that China is rising. So they are tilted more towards China. yes sir. देखिए, in the you know, लिख लिए. Yes sir. They are tilted more, or they are tilting more towards the China. देखिए, during pandemic, COVID pandemic, लिखिए, ऐसे लिखिए, during COVID-19 pandemic, during COVID-19 pandemic, Yeah. China has successfully demonstrated its capability Yeah, China has demonstrated its capability Yes sir. to handle the situation Yes sir. with iron law. Yes sir. It is said that the coronavirus has started its journey in China It is said that coronavirus has started its journey from China Yes sir. but China is least affected by the COVID-19 pandemic. China is least affected by the COVID-19 pandemic. Yes sir. The hegemon power United States of America, full stop देके फिर लिखेगा, the US has severely affected by it. US has severely affected by it.
and its economy also witnessed declining. Its economy also witnessed declining. Similarly, Yes. India was also worst affected by COVID-19 pandemic. And there are huge loss of Yeah. huge loss of economy. Yes. As well as of people. Yeah. China showed the way. Full stop. China showed the way. Shows the way. China shows the way. Shows the way. Yeah. Yes, sir. China shows the way. China ने रास्ता दिखाया ना इस pandemic के time पे. How China has actually really shows the way and its capability, right? Next concluding point में लिख दीजिए. Although US is undergoing a relative decline, although the US is undergoing a relative decline, but still, although the US is undergoing a relative decline, but still, it is largest economy, comma, strongest military, Yes, sir. and has highest political leverage. Yeah. In some, Yes, sir. prospect of a hegemonic war in contemporary world politics, prospect of a hegemonic war in contemporary world politics is only a far-fetched dream. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes. Yeah, लिखिए. What is possibility in the next decade or after? अब आगे क्या हो सकता है? Right? We are analyzing political science. Now we can predict what could be happen. What is possibility in the next decade or after? Yeah. देखिए, according to power politics theorist John Mearsheimer, the US should directly not engage in the BOP. The US should directly not engage in the BOP. The US should directly not engage in the BOP. Rather, it should go for buck passing.
Buck passing means. हाँ अभी बताते rather it Yes. should go for buck passing due to two reasons. Yes, sir. Regions. पहला देखिए geographical proximity. The geographical proximity. Yes, sir. And second, economic interdependence. Interdependence. Yes, sir. Okay. What is buck passing? लिखे buck passing Yes. implies Yes, sir. Implies passing the burden on the burden of handling an aggressor to someone else. Passing on the burden of handling. Buck passing means passing on the burden of handling an aggressor to someone else, comma, hoping that they will be able to check the aggression. Buck passing implies passing on the burden of handling an aggressor to someone else, hoping that they would be able to check the aggression. समझ में आया? Yeah. हाँ. मतलब हम हाँ जो ये responsibility अच्छा लिखिए ना समझ में आएगा. On which country the US would pass the buck? On which country the US would pass the buck? Answer is India. Why India? On which country the US would pass the buck? क्योंकि यूएस को लगता है कि हम लोग इंडिया एबल है Right. चेक द एग्रेशन. Right on. India एबल नहीं है. हाँ अभी बताते क्या करना है. अग्रेसर लिख लिया आपने? On which country US would pass the buck? Answer is India. Why? पहला लिखिए, पहला region. India has geographical proximity with China. ये दिखा तो ऊपर. कहाँ लिखा? 2 reasons. नहीं वो तो जो मिड सिमर का ये थ्योरी है ना. जनरल बोला है कि बक पासिंग क्यों करते हैं. ठीक है ये हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है. ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है. राइट. यहाँ पर यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है कि भाई यूएस अगर मान लीजिए ईरान को लड़ने जाता है तो ईरान यूएस से नजदीक थोड़ी है. मान लीजिए इराक लड़ने के लिए जाता है, इराक यूएस से थोड़ी नजदीक है. यूएस कहाँ पे जाता है? नॉर्थ कोरिया में लड़ने के लिए क्यों जाए? ये जो जिम्मा है किसी और कंट्री को ये पास कर दे बक को. राइट. ये बर्डन को, ताकि वो कंट्री अपना बर्डन जो अग्रेसर है उसको चेक करे और बैठे बैठे यूएस अपने मजे ले. आंसर इज इंडिया. व्हाई? पहला लिखिए. इंडिया हैज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी विद चाइना. डन. दूसरा लिखिए. इट हैज सेवरल लाइव बॉर्डर डिस्प्यूट्स which turn into war at any point of time. It has several, or C has, ऐसे लिखिए C has several
live border disputes. India के बारे में लिख रहे हैं. India has geographical proximity with China. C has several live border disputes which may turn into war at any point of time. Yes, sir. No country has capability to balance China in Asia, on Asian continent. No other country has capability to balance China on Asian continent. Right? Yes, sir. India perceived China as a great threat, security threat. India perceived China as a great security threat. इंडिया चाइना को बहुत ही अपना दुश्मन मतलब मानता है कि वो हमारे लिए खतरनाक है. India perceives China as a great security threat. Yeah. Indians have been humiliated by China in 1962. Indians have been humiliated by China in 1962. So, India is better suitable to pass the buck. To pass the buck. To pass the buck. buck. हाँ, buck, B-U-C-K. किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इसको ऐसा हिंदी में कह सकते हैं. जी बिल्कुल, किसी के और के कंधे पे रख के बंदूक चलाइए जमान बच्चे से. Right? Okay. What is benefit of USA? What is benefit of USA by buck passing to India? What is benefit of USA by buck passing to India? Okay, it is cost effective. It is cost effective. अपना पैसा बचेगा भी उनका और फिर लड़ने के लिए इंडिया इनसे खरीदेगा तो इनके पास पैसा आएगा भी. बहुत ही डिप्लोमेसी है बक पासिंग का. The US may use it to check China with low cost. The US may use it to check China with low cost. Yes, sir. US has always a strategy of buck passing to check the regional power. The US has always a strategy of buck passing to check the regional power by supporting the weak. Yes, sir. Example लिखिए. Pakistan in case of India Pak. India in case of India China. Yes, sir. Saudi Arabia in case of Saudi Arabia versus Iran. Yes, sir. Israel in the case of Israel versus Arab world.
Yes, sir. European countries, in case of European countries versus Russia. Yes, sir. तो ये रहा है एग्जाम्पल, लिखिए. To check the threat of China in Asia and Asian Pacific region. लिखना है. हाँ, लिखिए. Thus to check the China's dominance or China's threat. Dominance बन गया. Threat, dominance तो already है. Threat. Yeah. In Asia and Asia Pacific region. BOP has relevance. BOP has relevance. Yes. Right? The BOP has been defined differently by different scholar. Yes. 2 point is important to note. पहला, Yeah. India should protect its domestic interests and its territorial integrity. India should protect its domestic interest and its territorial integrity. China is continuously claiming on India's territory. Yeah. The Galwan Valley conflict is unsettled. The Galwan Valley conflict is unsettled and it may reappear at any point of time. At any point of time. जो गलवान वैली में हुआ वो कहीं भी कभी भी हो सकता है, right? Any point of time. Second लिखिए. Second, to maintain peace and stability in South Asia, Yes, sir. India needs to check China's threat seriously. India needs to check China's threat seriously. Yes, sir. पैरा चेंज कीजिए, लिखिए. In Asia, comma, BOP has more relevance to counter rise of Beijing. Beijing मतलब China. In Asia, comma, BOP has more relevance to counter rise of Beijing. Yes. Jinping is more powerful leader of China after Mao. Is more powerful. Yeah, Jinping is most powerful leader of China. Jinping, जो president है अभी का. Yeah. Leader of China. Jinping is most powerful leader of China after Mao. Jinping.
China has aggressive nationalism with surplus economy. This is the only country which जहाँ का budget हमेशा surplus में होता है. Wow. हम deficit. Yes, हम बहुत deficit में. हमारा NPA देख लीजिए कितना है. Right. देखिए, China has aggressive nationalism with surplus economy. Yes, sir. In the COVID-19, China has demonstrated its capability Yes, sir. to control the pandemic and Yes. it is the single country in the world which witnessed positive economic growth during pandemic. Then Yeah. पैरा चेंज कीजिए, लिखिए what India should do. What India should do. इंडिया को क्या करना चाहिए? हाँ. In public perception, देखिए in public perception Yes, sir. Pakistan and terrorism is the biggest challenge for India. Pakistan and terrorism is the biggest challenge for India. But security analyst and scholar For security. but security analyst, जो security analyst होते हैं ना, but security analyst and scholar have argued that Yes. China is the biggest threat for India's territorial sovereignty. China is the biggest threat for India's territorial sovereignty. Both may go for a limited war. Limited war. As China wants to sow, India Yes. her position in the power structure. Yes, sir. राजा राजेश गोपालन, ये JNU में प्रोफेसर हैं, राजा राजेश गोपालन. Okay. राजा राजेश गोपालन व्यू लिख करके फिर लिखिए नीचे. राजा राजेश गोपालन व्यू on India's policy towards China. Raja Rajesh Gopalan view on India's policy towards China. Yes, sir. Okay. India cannot afford NAM. Yes. Due to continuous threat coming from China.
लिख लिया? Yes, sir. China's power, comma, Yes, sir. India cannot afford NAM due to continuous threat coming from China. Full stop. China's power, Yeah. comma, geographical proximity, comma, and policies already represent a clear threat to India's national interest and security. Yeah. To second point लिखिए, to meet China's challenge, India should do alignment with USA. India should do alignment with USA. Yeah. New Delhi and Washington share common interest in balancing Beijing. New Delhi and Washington share common interest in balancing Beijing. Yeah. Next point लिखिए, among other strategy, Rajagopalan argued that, comma, among other strategy, Rajagopalan argued that India should maximize the size of military India should maximize the size of military, Yeah. Yes, sir. upgrade technology, Yeah. and expertise on military science, to balance China. Yes, sir. नेक्स्ट इसी में लिखिएगा या नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, क्वाड इज द स्टेप टू बैलेंस the rise of Yes. China. In addition, Rafale Yes. deal with France is also a step to balance China. Yes. Right? लिख लिया? व्यू ऑफ Yes. राजसी को पालन हो गया. हाँ, नेक्स्ट पैरा लिखिए. नेक्स्ट पैरा लिखिए. Yes, sir. बस एक पैरा 2 मिनट में लिख लीजिए. ठीक है. Both countries, US and China, are nuclear power. Yes, sir. And both have no first use policy. Yes. China felt humiliated Yeah. by India's decision to give Yes.
asylum to Dalai Lama and Tibetans, asylum to Dalai Lama and Tibetans. Yes, sir. Full stop. The China has claimed that the CIA and RAW both China are has claimed that both CIA America का है, CIA and RAW CIA and RAW working together to train yes, sir. Tibetans against China. Tibetan against China. Yes, sir. Right? China had border disputes in Ladakh as well as in the northeastern region of India. Northeastern region of India. Yes, sir. And these disputes may turn into war. Disputes? And these border disputes may turn into war. लिखा ही दिया है ये सब. Those disputes may turn into war. Yes, sir. At any point of time. Yeah. China also promoting Pakistan. Yeah. By different means to disbalance India. Yeah. Thus, BOP has its relevance in 21st century, especially in the context of India, China, and US. Especially in the context of India, China, and US. Yeah. Yeah, done. BOP done. अच्छा लगा? सही था? Yes, sir. Yeah, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको. बहुत interesting है. Now see the China-India disputes in this figure, right? आप देखिए जो disputed border है इंडिया चाइना के पास, इंडिया का जो claim है, हाँ, आप इंडिया claim यहाँ से जानिए, right? इंडिया का claim है, देखिए ये पूरा ये जो हमारा एरिया है ना, आप देख रहे हैं? Yes. आप देख पा रहे हैं? Yes. इंडिया का ये क्लेम है. राइट, बट आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, इट इज ऑक्युपाइड बाय चाइना एंड दिस इज कॉल्ड अक्साई चीन. Right? राइट? Yes. राइट. हाँ,
और ये जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ये जो पार्ट है, राइट, पीओके, राइट, पीओके, पीओके। और आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इंडिया का पार्ट है पीओके का, बट चाइना ने किसको दे दिया? पाकिस्तान ने चाइना को दे, पाकिस्तान को दे दिया, राइट। एंड ये जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, राइट। नहीं, पाकिस्तान ने चाइना को दे दी कि चाइना कैसे दे सकते? पाकिस्तान देगा ना। पाकिस्तान ने दे दिए चाइना को, right? And Yes, if you see the in the northeastern region, जो मैकमोहन लाइन है, जो मैकमोहन लाइन है, ये रेड वाला है, जिसको कौन नहीं मानता है? चाइना नहीं मानता है, चाइना नहीं मानता है, इसीलिए वो अरुणाचल को कहता है हमारा है। एग्जैक्टली, ये जो पार्ट है अरुणाचल का, ये उसको ये बोलता है हमारे तिब्बत का पार्ट है। चाइना ये क्यों नहीं कह देता ये पूरा इंडिया मेरा है? क्या भी, हाँ, यही तो है, इंपेरियलिस्ट नेचर है। अब ये देखिए, ये जो रीजन है, ये तिब्बतियन रीजन है, जिसको चाइना ने 1949 में अपने आप में मिला लिया था, राइट। और उस समय बहुत बड़ी गलती हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स से, इंडिया से। उस वक्त ही चाइना को रोकना चाहिए था, राइट, तो वर्ल्ड बेटर होता आज, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे डोकलाम में, आपने देखा होगा कि जो डोकलाम एरिया है, वहां पर कितना पिछले साल चला था, इस बार गलवान वैली में मार पिटाई हुई थी। एंड इफ यू सी द इंडिया चाइना पावर बैलेंस, you can see the China is much more power than India, right? So if you see the military, तो इंडिया का अगर मिलिट्री ज्यादा है, मिलिट्री पर्सनल, बट चाइना का कम है, बट जो बेटर इक्विप्ड है वो चाइनाज मिलिट्री है। जो बेटर मिलिट्री साइंस ऑलरेडी है वो चाइना के पास है, रादर देन इंडिया के पास, राइट? अगर स्पेंडिंग देखेंगे मिलिट्री बजट, तो देखिएगा कि इंडिया कितना करता है, मात्र 71.1 बिलियन डॉलर, चाइना करता है 261 बिलियन डॉलर, राइट। अब इंडिया का जो सबमरीन है वो मात्र 16 है, चाइना के पास 76 है। नेवल एसेस 295 है, इसके पास 714 है। न्यूक्लियर वारहेड 150 है, करीब दोगुना से ज्यादा है चाइना के पास। हेलीकॉप्टर 1692 है, चाइना के पास एग्जैक्टली दोगुना से थोड़ा कम है, पर दोगुना के आसपास है। टैंक तिगुना है, राइट। सो पावर है वो एसिमेट्रिक पावर है, इट्स नॉट सिमेट्रिक पावर। इंडिया और चाइना के बीच में जो पावर है वो बिल्कुल डिसबैलेंस है। हाँ। सो बैलेंस करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर, BOP इज वेरी मच रेलिवेंट, राइट। इसको भी आप सेंटेंस में लिखना कि हाउ पावर इज asymmetrically located in India and China. लिखिए। Yes, sir. How power 10:36 हो गए सर। आप खुद लिख लेना इसमें ये सब, राइट। और ये उसके बाद मैं खत्म करूंगा, फिर कल कलेक्टिव सिक्योरिटी पढ़ेंगे। How power is distributed between China and India, ये इसका आप लिख लेना थोड़ा सा इस स्लाइड, Yes, sir. right? Yes, sir. So see you tomorrow then. Okay, sir. Bye, sir. Bye.